गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणीम पर्वतये. The first step is purification of body. This is called pavitríkaranam. ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचिह्यं पुनात् पुण्डरीकाक्षा पुनातुः. We have three bodies: subtle body and physical body and causal body. So purifying all the three bodies through Achmana mantra. Om Amritopastranamase Swaha. Om Amrita Pidhanamase Swaha. ओम सत्यम यशा श्रीर्मय श्री श्रेयतां स्वाहा. हस्तो प्रक्षाल्यः. ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजोवृद्धं कुरुष्मे. टू एनर्जाइज योर सीट and strengthening the power of your seat, just to touch the feet of Ma, the goddess earth. ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकः देवी त्वं विष्णु धृता त्वं च धारयामां भद्रे पवित्रं कुरु चासनम्. आधार शक्ति पृथ्वी नमः. गंधाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि. And pray to light. This is the witness of your karma, sacred karma. ओम भूदीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी यावत् कर्म समय तावत् स्वीतरूप. दीपनाथ भैरवाय नमः. गंधाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि. धूपपात्राय नमः. गंधर्वदेवाभ्यो नमः. गंधाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि. ओम महाशंकस्त विष्णवे नमः. घंटस्त गरुड़ाय नमः. गंधाक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि. To energize the entire atmosphere and to remove all negative sets, all evil spirits, evil things by blowing conch. This is the sound of conch which energizes the entire atmosphere. ओम अपसर्पनुते भूताय भूताभि संस्थाय भूताभिकर्ताराते शिवाय अपैक्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वजं सर्वेषां विरोधेन पूजा क्रम समारभे. एवं दति सुरक्षाय चामुंडा शौवाहना. Before going to start puja, we want protections from all the directions, and we are saluting all the deities of the directions just to protect us so that we could do the puja properly. ओम हरि ओम अहम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृत्रहं तिरैरङ्गे तुष्टभागं सस्तनोर्भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः. गन्धक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि. Now we are going to start Swasti Vachan, these mantras. We salute all deities and just to energize the entire atmosphere and protection from all sides and getting blessing of the deities for prosperity, better health and all the things you want. So just to listen these mantras, very powerful mantras. Put some flowers and akshat in your hands. Om Hari Om Swasti Nai Sarvaha Swasti Naha Pukha Vishwavedaha Swasti Nastariksho Arishtademi Swasti Nam Brihaspatridharayatu Ambe Ambike Ambarike Namanayadi Kachana Shashat Shvaka Subhadrekam Kam Prilavasanim Ashusham Tirabhavatu Shikrasham Tirabhavatu Srabhadasham Tirabhavatu Hari Om. We are going to select 14 deities which we salute every day, and your parents also included in these 14 deities. Now just to hold your hands and remember all the 14 deities. Om Bhurvaswaradhipati Sahitaya Sriman Mahaganaadhipate Namah. Om Lakshmi Narayana Bhyam Namah. Ganadhipataye Namah. Hari Om. Now we will remember the 12 names of Lord Ganapati
just to remove all the obstacles coming in your life and success in this puja also. So we are remembering the 12 names of Lord Ganapati. Om Somaka Chaigadantasya Kapilo Gajakarandaka Lambadrasya Vignanaso Vinayaka Vakratunda Mahakaya Surya Kote Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Dharmakare Sarvada Sriman Mahaganadipade Namah Mangala Murtaye Namaha Hari Om श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे ववस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे. दिस इज कॉल्ड संकल्पः. why do you want this puja? What is in your mind? And you are putting your wish to before the deities, before the God, just to fulfill all our desires and give us success in business and good health and prosperity in life. So this is sankalp we have completed. ओम अस्य श्री बृहस्पति मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः गुरुर्देवता ब्रीं बीजम नमः शक्ति मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्न मिस्टर कन्या लगन कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जातकस्य गुरु ग्रहजन्य सर्व अरिष्ट निवारणार्थे बीज मंत्र जपे विनियोगः. अब ये इसको शुरू करिए, न्यास वगैरह स्वयं कर लीजिए. आप बोलिए ओम. This Vedic puja we have created energy grid. In this energy grid we have included all the healing stones used in Reiki and pranic healing. This is black tourmaline just to neutralize negative energy. And in between this is Kanthi, a mala of Rudraksh, 1 facet to 14 facet. Very powerful mala. And this is the crystal beads, crystal mala. And all the things required for energy we have collected here and put around the native so that he could gain the energy flow of these things. Besides all these things, we have giving frequency therapy, microcurrent frequency therapy and the resonance therapy through the device of Healy. Healy is the device invented by German scientists, or we are applying here just to release all evil effects of planets in your auric body. So we are running the program of planets. This program is of 72 minutes. We have invited your consciousness here in these photos. Through this process, you will get the positive effects of all these acts we are doing here. And this is energy grid, very powerful energy grid, including Healy device. Healy device is very powerful device, and this is used in distance healing. So that you could get maximum benefits from this puja. We are doing the puja Saptagirtha Matrika, 7 stream of cow ghee. We are putting here 7 streams of cow ghee. This is the very symbolic puja. We are making first stream to Sriya. Sriya means fame. Second stream Lakshmi. Lakshmi means money. Third stream is Dhirte. Dhirti matlab patience. And the fourth stream is Meda. Meda means intelligence. And the fifth stream is Pushti. Pushti means strength. And sixth stream is Sarda. Sarda means faith. And the seventh stream is Saraswati. Saraswati means knowledge. Put the flow and combine all these streams. इन सबको एक कर दीजिए धारा लगा करके. तो this is the symbolic puja. We want all the 7 type of prosperity in combined form. That is called Saptagirtha Matrika Puja. Om Burvasriye Namah, Om Burvasa Lakshmi Namah, Burvasa Dhrite Namah, Burvasa Medhaya Namah, Burvasa Pushte Namah, Burvasa Sardhaya Namah, Burvasa Saraswati Namah.
ओम भूर्भुवः सप्तघृतमातृकाभ्यो नमः। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं मा देवस्था सविता पुनातु वसः पवित्रेण शतधारेण सुपुवा कामधुक्षः। ओम भूर्भुवः सप्तघृतमातृकाभ्यो नमः। गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि। अनया पूजया वसोर्धारा देवता प्रियतां न मम। हरि ओम। Every puja, there is a role of our pitras. Pitra means our forefathers and ancestors together. We always remember our forefathers and ancestors, and we donate clothes, cereals, all the usable things. And so here we are remembering our forefathers and ancestors just to take their grace also. ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायज्ञ नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायज्ञ नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। पितृतृप्ति प्रदो भव, पितृतृप्ति प्रदो भव, पितृतृप्ति प्रदो भव। हमारे पितृ जो है प्रसन्न हो, उनके दया दृष्टि कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्तोत्र मंत्र श्री रामचंद्र श्री बड़वान हनुमान देवता मम यजमानस्य एवं जातकस्य समस्त रोग प्रशमनार्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य विवृद्धम समस्त पापक्षयार्थम सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थम हनुमत बड़वानर स्तोत्र जपमहम करिष्ये। इसको रख लीजिएगा अपने हाथ में, बाद में इस्तेमाल करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्रीमानुमते प्रकट पराक्रम सकल दिंग मंडलय शोभितां धवलीकृत जगत्त्रय वज्रदेव रुद्रावतार लंकापुरीधन उमारमल मंत्र उदिति बंदना पारिष्टान्नाशयन सर्वशत्रुन्नाशयन असाधम साधय साधय हुम फट स्वाहा। दिस इज कॉल्ड हनुमत बड़वानल स्तोत्र झाड़ा। और वेरी इफेक्टिव झाड़ा, वेरी इफेक्टिव मंत्र स्तोत्र विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल योर एनिमीज। वट एवर एनिमीज डूइंग against you, they will stop after doing this jhada, this puja. Okay, spray. This is we are using essentials, all essentials used in this spray. Om Dyohu Shanti Randrik Shanti Prithvi Shanti Rava Shanti Rushada Shanti Hi Vanaspata Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi. And the amazed fusion technology based quantum pen we are using. This pen spreads the positivity of the native and protects the native from all negative energies and enhance and boost up the aura field. This is we are using this technology also. This is quantum healing technology is called, and so that native good benefits from all type of benefits he wants, he will get through this process. लोकचकलेषु एवमेव त्वयाकारे अस्मद् वैरि विनाशनं सर्वदा प्रशमनं ते लोकचकलेषु एवमेव त्वयाकारे अस्मद् वैरि विनाशनं अन्ति च सिद्ध संगः। हरि ओम। We are very much influenced by planetary effects, planetary presence, and main 9 planets we have in our chart. And to get the favor of the planets, we are donating things related to all these planets, so that we could get maximum benefits of these planets and favor from the planets. Avamati Prochari Sankalpaha Kashyap Gotroutpannah Putra Falguni Nakshatra Jatikasya Evam Mantrartha Sapala Santu Purna Shant Manota Shatrana Buddhinashastu Mitrana Mudiyastavaha Goram Tam Ketum Pranamamyam. Hari Om. मिंचितगं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ईयते विशुभ्रवाजिनैव प्रतिष्ठं जदजरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत विराजो अधिपूरुकः स जातु अजर्षदपश्चा भूमिमथ पुरः। हरिः ओम्। ब्राह्मण गुणधर्मसे स्वाहा। ओम निमोदा दिवाहागदे दिव्यमय अमवागुणिता गुणशिलति ओम भूमाय स्वाहा। आहुति जब पूरी हो जाती है उसके बाद 10 दिक्पाल की पूजा होती है। ये 10 दिए हैं, 10 दिए मतलब 10 दिशाओं के देवताओं के लिए एक एक दिया। तो इसमें ये प्रेयर की जाती है कि जो जातक यजमान है 10 देवता 10 दिशाओं से उसकी रक्षा करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। द डेटीज ऑफ द डायरेक्शंस आर वर्शिप्ड हियर।
तो सभी दिशाओं में एक एक दधी मांस बलि कहते हैं इसमें, मतलब दही, उड़द, चावल और सिंदूर इसमें रखे और उस पर दिया रखे। तो इस तरीके से सभी दिशाओं को पूजा जाता है। इसके बाद फिर क्षेत्रपाल का दिया पूजा जाता है। क्षेत्रपाल जो होता है चौमुखा दिया होता है ये। क्षेत्रपाल मतलब भैरव। क्षेत्रपाल के अधीन भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, मारीगण, बैताल, ब्रह्म राक्षस सब आते हैं। तो क्षेत्रपाल की पूजा करके और उसको यजमान के ऊपर से घुमा करके सारी आला बलाएँ जितनी भी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। क्षेत्रपाल की पूजा का ये नियम है कि अगर कोई भी ऊपरी बाधा हो, तंत्र का प्रयोग हो, ब्लैक मैजिक वगैरह हो, किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी हो, तो क्षेत्रपाल की पूजा करने से वो दूर हो जाती है। तो अभी जैसे क्षेत्रपाल पूजते हैं, पूजने के बाद फिर उसको जोत को उठा के जाते के ऊपर 3 बार घुमा करके और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए। 3 बार घुमा दीजिए ऊपर से बस। सर्वबाधा प्रशमनम ते लोकचक्रेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ईश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती, वी आर डूइंग आरती। आरती मीन्स prayer to remove sorrow, dukh which comes in our life. We pray to God to remove all these sorrows from our life. That is called Arati. So finally, when we completed the Agnihotra Havana, after that Arati is being performed. All the Prohits give their blessings to the native, to the Yajmans, for his flourish in future and for all sort of achievements in life. So we are giving our blessings with the heart, reciting mantras. Om Dyuh Shantiramtarchakam Shanti Prithvi Shantirapah Shanti Udnasha Sumitranam Udiyastava. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Vishnave Namah. Paripurna Swasth Paripurna Satya Sunti Yajamana Sakama Purna Sant Manorata